Okay, so let us see the numericals. जो मैंने आपको जो शीट शेयर किया था ऐप के अंदर, कुछ 100 मार्क्स का वो शीट था, असाइनमेंट था। तो उसमें से जो न्यूमेरिकल्स है तो वो हम देखेंगे। जो आपको नहीं आए रहेंगे तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगर नहीं तो फिर मैं मुझे जो लगता है कि वो नहीं आए रहेंगे आपको, तो वो मैं इसमें कवर करता हूँ। ठीक है, यस। ओके, read this 27th question. See here, it tells us simply that at what point the projectile motion, number one, the potential energy is maximum. Number two is the kinetic energy is maximum. And number three is that the total energy is going to be maximum. Yes, what do you think? When the potential energy can be maximum? Yes, put it in the chat box fast. At what point in the projectile motion the potential energy can be maximum? At highest point, isn't it? At the highest point, just because पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उनको पता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, राइट? और mgh, तो इसमें डिपेंड्स ऑन h actually, and that's why we can see whenever the potential energy, whenever the height is maximum, at that time only the potential energy is going to be maximum. Yes, चलो। एंड काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होता है बताओ? काइनेटिक एनर्जी at the lowest point, right, before the touching the ground, or just after the fire it is launched, right? So immediately just after the projectile is launched, or just before it touch the ground. And what about total energy? We can say, what can we say about the total energy, where it is maximum? Yes. Where should the total mechanical energy of projectile must be maximum? It should be constant. Okay, it will be constant. It is not maximum or not minimum. Yes, the total energy is going to be constant, because we already have the law of conservation of energy, okay, which tells us simply that the energy can never be created nor be destroyed. It can only be converted from one form into another form. So see here, what happens in case of the projectile motion is, when the projectile is just launched, जब वो हम फायर करते हैं तो उस मोमेंट पे उसका स्पीड ज्यादा होता है, ये तो सब जानते हैं बिल्कुल। The speed of the projectile is maximum, and hence the kinetic energy also is maximum at the point of projection, right? But as its height goes on increasing, what happens is its potential energy goes on increasing. Yes, यहाँ पे kinetic energy maximum होता है बिल्कुल, लेकिन potential energy क्या होता है उसका? Zero होता है. Why? Because its height is zero, right? And potential energy का formula क्या है? mgh. It depends on height h, and since the ball is just at the ground, तो ground से उसका height कितना हुआ? Zero हो गया, तो इसलिए height zero, तो potential energy भी zero at this point here. Okay, at the highest point what happens is the kinetic energy is going to be minimum. Okay, minimum, and the potential energy is actually going to be maximum here. Why? Because
the potential energy depends on height, and height is going to be maximum at this point here, and that's why the potential energy is going to be maximum, right? Yes. And then again, the next here is what about this last point? Once again we can say that the kinetic energy is going to be minimum. Okay, the kinetic energy is going to be maximum, and the potential energy is going to be minimum because it just hits the ground, right? तो यहाँ पे फिर से एक बार काइनेटिक एनर्जी जो है तो वो उसका मैक्सिमम बनता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे जीरो बन जाता है. यस, बट द सम ऑफ दीज टू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्या वो मिनिमम है? मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो रहेगा या नॉन जीरो, कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम होगा. जीरो रहेगा या नॉन जीरो रहेगा, क्या समझते हो? At the highest point of the motion of the projectile, will the potential energy, kinetic energy will be zero or non-zero? तो देखो, ये बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है. This is a very big misconception in the most of the students, that the kinetic energy of the particle is zero at the highest point here. It's a misconception. Why? Because the particle is still moving in at the highest point also. हाईएस्ट पॉइंट पे अगर देखो ठीक से, तो पार्टिकल मूव हो रहा है ना, वो रुका थोड़ा ही है. हाँ, उसने सिर्फ ऊपर जाना बंद किया है, लेकिन मूव करना बंद थोड़ी किया है. देखो ठीक से, अगर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक से केयरफुली, और तो देखो, समझो एक बास्केटबॉल है, तो बास्केटबॉल में बॉल को मैंने यहाँ से हिट किया, ठीक है? जैसे इसको यहाँ पे हिट करेंगे तो वो ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पे जब आएगा तो यहाँ पे वो मूव तो कर रहा है ना, ऐसे थोड़ी कि वो रुक गया. हाँ, ऊपर जाना उसका बंद हो गया, लेकिन सामने के डायरेक्शन में तो जा रहा है कि नहीं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कंटिन्यू करेगा विद द सेम स्पीड, विद द सेम वेलोसिटी. सो रुका तो नहीं है, वो रुका नहीं है. और उससे भी आगे जाके इस पॉइंट पे जब अटैक करेगा, ग्राउंड पे जब पहुंचेगा, तो उस केस में भी उसका जो वेलोसिटी है वो पूरे जर्नी में किधर भी उसका वेलोसिटी जीरो नहीं बना है. हाँ, लेकिन अगर तुमको बोला कि एक बॉल है, सपोज ये बॉल अगर मैंने सपोज सीधा ऊपर थ्रो किया, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स है, वर्टिकली अपवर्ड्स इस तरह से, तो वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाएगा. धीरे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी कम कम होता जाएगा, और टॉप पॉइंट पे जाके फिर से नीचे तरफ रिटर्न करेगा. बराबर. अभी यहाँ पे जब वो टॉप पॉइंट पे होगा, तो उस टॉप पॉइंट पे क्या कहते हो, उसका वेलोसिटी जीरो होगा या नहीं होगा? वर्टिकली थ्रो किया है ना उसको, वर्टिकली. तो देखो, जब वर्टिकली हम थ्रो करते हैं बॉडी को, तो उस समय जब वो ऊपर ऊपर जाता है, टॉप पॉइंट पे जाता है, तो वहां पे रुकता है ना एक सेकेंड, एक मोमेंट के लिए क्यों ना हो, वो वहां पे जाके रुकता है. और जैसे ही रुक गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसका वेलोसिटी जीरो हो गया. बिल्कुल, उसका स्पीड जो है वो जीरो हो गया. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट इन केस ऑफ vertical motion, remember. But in case of projectile motion, we'll see the difference here. In case of projectile motion, the velocity at every point of the projectile has two components, right? ये velocity जो है उसके दो components रहने वाले हैं. एक component जो होता है वो इस direction में होता है, horizontal direction में होता है, और दूसरा component जो है वो vertical direction में होता है. ये देखो ऐसे. तो these are the two components of this velocity. जैसे वो particle थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उसका velocity थोड़ा डायरेक्शन में चेंज होता है. ये देखो ठीक से, यहाँ पे डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, राइट? तो डायरेक्शन अभी उसका ये हो गया, ये वाला हो गया. दिख रहा है ठीक से? ये देखो, मैं थोड़ा थिक पेन लेता हूँ तो तुमको ठीक से समझ में आएगा. ये देखो, सपोज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी दिस वे, राइट? सो इन दिस केस द वर्टिकल कंपोनेंट हैज बीन रिड्यूस्ड समवॉट, बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज स्टिल कांस्टेंट, नो डाउट. यहाँ पे अगर जाता है ऊपर, और थोड़ा ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है वो और बेंड हो गया, टिल्ट हो गया ना, तो एक्स एक्सिस के अलावा वो ज्यादा झुक गया. तो इसकी वजह से उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतना ही रह रहा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो थोड़ा और कम हो गया. तो ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे कम 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 होता जाता है, और जब ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है. ये देखो ऐसे. तो ऐसे केस में उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का,
वो तो उतना ही रहेगा, बट वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 बन जाएगा। देखो vertical component becomes 0. So only vertical component of the velocity becomes 0, not the horizontal one. The horizontal component of the velocity is not 0. It is going to be same as the horizontal component of the velocity initially here. तो इनिशियली जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा ux जितना भी रहेगा उतना ही यहाँ पे भी होता है प्रोजेक्टाइल का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट always remains constant at every point, and that's why the horizontal component never becomes 0, and that's why the velocity of this projectile never becomes 0 throughout its journey. Okay, vertical velocity becomes 0. We can say that vertical velocity exactly becomes 0 at the highest point. मतलब ऊपर जाना वो बंद करता है बिल्कुल, इसकी वजह से उसका हम बोलेंगे vertical velocity 0 बन गया, but not the velocity overall. Okay, तो ये बात याद रखो ठीक से। और अगर रही बात फॉर्मूलेस की, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो at any point if you want to find out the expression for potential energy, then we can get it as mg into h, and h मतलब क्या है यहाँ पे, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका जो हाइट होता है उसको हम यहाँ पे y बोलते हैं, बराबर y। और इस y को अगर हम टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सेकेंड कैडामेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं आराम से, जो बनेगा uy into t minus half gt square, and hence we can say that this will be y, value of y, and hence the potential energy actually at any point in general will become actually mg into this value of y is to be replaced here, so as to get this as ux into t minus half into gt square। करेक्ट है, ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसको ये हम सपोज अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्ड कैरामेटिकल इक्वेशन, अगर थर्ड कैरामेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे ना तो हमको देखो वी वाई स्क्वायर मतलब वी, हाँ नहीं वो तो वेलोसिटी के फॉर्म में आ जाएगा, वो उसका कुछ फायदा नहीं, ठीक है। बट वी कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी आल्सो एट एनी पॉइंट। हाउ विल यू गेट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इन जनरल इज फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट है। ये फॉर्मूला से हमको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, नो डाउट। But as we know that the velocity v is at any point is given by the formula root of vx square plus ux square, vx square plus vy square in general, and hence we can just replace this v square by vx square plus vy square, बराबर है। और फिर अगर but we already know that in the projectile motion the horizontal component of the velocity remains constant, so we can say that vx is going to be same as ux, right? And at the same time vy square, तो vy square किसके बराबर होगा? vy square will actually be equal to uy square minus 2 times of g into y, करेक्ट है। तो ये अगर वैल्यू डाल दिया यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर, ये जो वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर है कि नहीं, उसके अंदर अगर ये वैल्यू डाल दो तो हमको क्या मिलेगा? देखो तो वी स्क्वायर हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यू वाई स्क्वायर के वी वाई स्क्वायर के बदले क्या आएगा? यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy, okay, but already we know that this ux square plus uy square means u square only. So we can say that this v square is actually equal to u square minus 2gy. This is also the third charamatical equation in general. So we can just replace it by that and get this as half m into bracket to u square minus 2gy, and y can be replaced by this quantity here if we require. If we want to find out it in terms of the time, then we can put it here and get the answer. Okay, yes, so this is going to be actually the formula for kinetic energy, potential energy, and if we want to find out the total energy, तो total energy कैसे निकालेंगे? just by adding these two, right? तो एडिशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का, तो उससे हमको क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी मिल जाएगा। so let us try to find it out. so what is the potential energy? तो देखो total energy is going to be potential energy plus kinetic energy, right? so what is the potential energy? it is actually mgy, बराबर।
So just put it here and we get this mgy plus, what is this kinetic energy? See it here. So it is to be replaced here. So as to get this as half into m in bracket, we get this as u square minus 2gy, right? And then we can just open this bracket and get this as mgy as it is plus half m into u square. Okay, this is going to be u square and minus ये सेपरेट कर दो इसके लिए, तो क्या बचेगा देखो, तो वो बनेगा हाफ इंटू एम इंटू 2gy, करेक्ट है। अभी इसमें से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमको, तो ये बनेगा mgy प्लस हाफ mu स्क्वायर and minus mgy again, so that this mgy and mgy gets cancelled, and what we are left with is the total energy is going to be actually equal to half mu square, which is a constant because this does not depend on any variable factor. U is constant, m is constant throughout the motion, and that's why we can say that the total energy is also going to be a constant one, no doubt. क्योंकि यहाँ पे एम जी वाई, जो ये वाई वाला जो टर्म था वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है, वाई वाला टर्म ही कैंसिल हो गया, तो वाई जो वेरिएबल था वो इक्वेशन में से ही हट गया, गायब हो गया। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द टोटल एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ कांस्टेंट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ठीक है। Yes, come back to the question paper again. Yes, can you do this 28th one? Just check. Just read it once again here. The ceiling of a long hall is 25-meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 can go without hitting the ceiling? Okay, देखो 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसको थ्रो किया, और व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो यहाँ पे ये एक हिडन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या हमको निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट द रेंज। ओके, रेंज इज टू बी फाउंड आउट, एंड रेंज हमको निकालना है और वो भी मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम। और सीलिंग जो है वो 25 मीटर हाई दिया हुआ है और 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसको थ्रो किया जा रहा है, तो मैक्सिमम कभी मिलता है हमको रेंज, वो तो हमको पता है ऑलरेडी, व्हेन वी थ्रो इट विद द 45 डिग्री एंगल, राइट। तो जब 45 डिग्री एंगल पे हम थ्रो करते हैं तभी हमको मैक्सिमम रेंज मिलता है। ये बात अगर समझ के रखो तो हम देख सकते हैं आराम से कि सपोज ये हॉल है, ठीक है, जिसका हाइट जो है ना वो 25 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट है। तो देखो ये 25 मीटर हाइट उसका दिया हुआ है और यहाँ पे हम 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो ये यू हो गया, बराबर, ठीक है। तो जैसे ये हम बॉल थ्रो करेंगे इस तरफ, तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस सो दैट वी कैन थ्रो इट अप टू, सो दैट इट कैन हिट द मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ठीक से, ये जो हाइट है तो इस हाइट को हमको मैक्सिमम हाइट लेना पड़ेगा, और जबकि 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो हमको ये पता है ऑलरेडी कि 45 डिग्री थ्रो करने से रेंज मैक्सिमम बनता है, और हाइट हाइट जो होता है तो वो हाइट इस रेंज के 1/4 हुआ करता है। ये बात पता है, कल भी या परसों भी मैंने बताया था कि व्हेन थीटा इज 45 एट दैट टाइम द रेंज इज मैक्सिमम, एंड दैट मैक्सिमम रेंज इज एक्चुअली इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द हाइट, करेक्ट है। तो अगर ये बात हम यूज करेंगे तो इससे हमको सीधा मिल जाएगा आर मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैक्सिमम रेंज विल एक्चुअली बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस h। h मतलब कितना है यहाँ पे 25, करेक्ट है। So it's going to be 25. So if we just multiply this 25 by 4, then we can get this 100 meter as a final value. Okay. So this is actually going to be the answer, which is based on the fact that when theta is going to be 45 degree, then the maximum range is actually 4 times of the maximum height. Okay. तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो, बहुत काम का चीज है ये। Okay. Let us see the next question.
Read this question number 30. Yes, a boy stands at 78.4 meter from the building and throws a ball which just enters a window 39.2 meter above the ground. ओके मतलब ग्राउंड से ऊपर 39.2 मीटर डिस्टेंस पे एक विंडो है, तो उस विंडो में से ये बॉल जस्ट एंटर करता है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल. ओके, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है हमको. एक तो दिया है कि बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, राइट. सो द सिचुएशन मस्ट बी लाइक दिस somewhat. Okay, suppose this is the ground and suppose this is the boy standing here. Okay, and there is a window here which is at 39.2 meter above the ground, and the boy is standing at a distance of 78.4 meter from the building. Correct है? Check करो एक बार. देखो ठीक से. Boy stands at 78.4 meter. Yes, 78.4 meter from building and throws a ball which just enters a window which is 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of the ball. Yes, तो 39.2 डिस्टेंस पे ये विंडो है और उसमें से वो जस्ट एंटर करता है, तो इसका मतलब बॉल का जो ट्रेजेक्टरी है वो कुछ ऐसा रहा होगा. यहाँ से अगर बॉल सीधा एंटर करता है तो इसका मतलब जरूर ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा कि नहीं, और उसके बाद फिर आधा जो बचा हुआ जो जर्नी है वो उसको इस तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा. So this should be the overall motion of the ball, which means that अभी by symmetry, okay, by symmetry common sense से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये भी तो 78.4 मीटर ही रहने वाला है. करेक्ट है. और अगर ऐसा है तो उस केस में फिर ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया और ये पूरा जो है वो रेंज हो गया. करेक्ट है. तो रेंज और मैक्सिमम हाइट इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं आराम से. देखो ठीक से. तो रेंज कितना हो गया फिर. देखो 78.4 प्लस 78.4 अगेन which happens to be actually, yes, how much it is, 150, नहीं, 157.8. करेक्ट है. चेक करो. 4 plus 4 is 8 and 8 plus 8 is 16 ना. हाँ, तो 156.8 एक्चुअली. ओके, एंड रेंज तो मिल गया. चलो ठीक है. मैक्सिमम हाइट कितना है यहाँ पे, 39.4. करेक्ट है. यस, तो मैक्सिमम हाइट मिल गया, रेंज भी मिल गया. तो अभी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, डू यू नो. ओके, लेकिन उसमें हमको एंगल नहीं दिया है ना. यस, एंगल इज नॉट गिवन. ओके, वी कैन जस्ट फाइंड इट आउट. सी, बिकॉज ओके, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. देखो, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी. करेक्ट है. और हाइट का, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. राइट. यस. सो अभी इन दोनों इक्वेशंस में से हमको थीटा एलिमिनेट करके u निकालना है. करेक्ट है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी वांट हियर. सो लेट अस राइट. सबसे पहले ऐसा करो, इन दोनों का रेशियो ले लो. ओके, so if we take the ratio of r
to h, then what we get is r is going to be u square into sine 2 theta divided by g, and that is multiplied with the reciprocal of this h, right? तो इस h का अगर उल्टा करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा 2g अपॉन u square into sine square theta. Yes, just simplify this further. तो u square जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, u square gets cancelled, g also gets cancelled, and if we expand this sine 2 theta, because we have the formula for that, that is 2 sin theta into cos theta, करेक्ट है? ये फॉर्मूला से उसको एक्सपांड करेंगे और नीचे जो है तो वो ऑलरेडी, अच्छा ये 2 भी तो यहाँ पे बचा हुआ है कि नहीं, तो इसलिए वो 2 भी यहाँ पे आएगा और नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सो हियर साइन थीटा and sin theta will get cancelled and we'll be left with r by h is equal to 4 cot theta, करेक्ट है? देखो ठीक से. So if we put all the values here, then we can get this r, which is 156.8, that is to be divided by h, which is 39.2. Yes, and that is actually going to be 4 times of cot theta. Okay, so just reduce this. ये किसी टेबल में है क्या, चेक करो एक बार. 9.8 के टेबल में है क्या? देखो 9.8 का ये फोर्थ मल्टीपल है, नो डाउट, बट 9.8 के टेबल में ये आता है क्या, चेक करो एक बार. 9.8 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, नहीं किसको 9.8 से डिवाइड करो. हाँ नहीं एक मिनट 78.4 जो है ना, 78.4 वो एक्चुअली 9.8 का ना 8th मल्टीपल है. चेक करो, मल्टीप्लाई करके देखो इनको. 8 8 जा 4, 8 8 जा 64, ये 6 कैरी बन गया, और 9 8 जा 72 प्लस 6 इट बिकम 78, करेक्ट है ना? तो देखो 9.8 का 8th मल्टीपल अगर 78.4 है तो फिर ये भी तो 78.4 ही है, तो उसका डबल हो गया ना वो, मतलब टोटल जो है. तो ये जो 156.8 जो है वो 78.4 का डबल है, करेक्ट है? तो दैट शुड बी एक्चुअली 16th मल्टीपल ऑफ 9.8, राइट? यस, वी कैन वेरीफाई. 9.8 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखो. Okay, you can get it as 156.8, and hence we can say that this will cancel and we'll be left with 16 here, right? So that this 4 again gets cancelled with 4 again gets cancelled with the 16, leaving behind 4 here, and then we can get that this 4 just gets cancelled. तो क्योंकि 4 equal to 4 cot theta ये हमको पता चल रहा है. जो 4 कैंसिल होके क्या मिलेगा हमको, 1 equal to cot theta बनेगा. समझा ठीक से? And 1 equal to cot theta means what? Means theta must be actually equal to 45, क्योंकि cot 45 is actually 1, बराबर है? और वैसे भी देखो ये बात कि ये 39.2 है ना, 39.2 ये वाला, तो 39.2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमको क्या मिलेगा पता है? करके देखो. 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 पॉइंट यहाँ पे, तो 3 कैरी, और 4 3 जा 12 प्लस 3 15. तो देखो यहाँ पे तो ये 156.8 मिल गया, जो कि यहाँ पे रेंज है. तो इसका मतलब यहाँ पे रेंज जो है ना, तो वो रेंज ऑलरेडी 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है. और अभी हमने देखा था कि रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट कभी होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 होता है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे हमको पता चल गया कि थीटा इज 45 डिग्री, एंड व्हेन थीटा इज 45 डिग्री then we can say that
रेंज इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, नो डाउट। चलो ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। अब लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। तो उसके लिए या तो मैक्सिमम हाइट का या तो रेंज का कोई कोई किसका भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, तो उससे तुमको आराम से मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा। Let us try to use the formula for range, which is u square sine 2 theta upon g. Okay, so that we get this range r, which is going to be 70, नहीं sorry, हाँ, range का formula है 156.8 is equal to u square into sine of 2 times of 45, which is actually going to be sine 90, which is 1, and that is divided by 9.8 here. Okay, so that we can just get this 9.8 multiplied this side, so as to get this 156.8 into 9.8, which is equal to sine of, sorry, u square into sine of 90, which is 1. So in the next step, we can just express this 156.8 as 9.8 into 16. Just we have proved it, and that is multiplied by 9.8 as it is, which is going to be equal to u square into 1, which is u square simply. So here we can just express it as 9.8 whole square into 16. This 16 can be written as 4 square, correct? Hai? So this is 4 square, and here it is u square. If we take the square roots on both sides, then we can get simply 9.8 into 4, which is going to be equal to u, and hence u becomes actually equal to 9.8 into 4, how much it is? It is going to be 39.2 meter per second. Okay. So here it is going to be the final answer. That is the initial velocity of projection. Yes, just take the screenshot of this fast. Let us move to the next question. Yes, just read it fast. An aircraft is flying at the height of 3,400 meter above the ground. Okay. So देखो ठीक से, an aircraft is flying at a height of 3,400 meter above the ground. If angle subtended at the ground observation point by aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree, then what is the speed of the aircraft? Yes, so we have to find out the speed of aircraft, and it's given that the angle subtended at the ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart, that is given to be 30 degree. तो देखो सिचुएशन ऐसा है, देखो ठीक से, suppose this is the ground and this is aircraft, okay, which is flying in this direction here in this constant speed. Okay, अभी ये जो एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, तो उसके दो पोजीशंस जिनमें 10 सेकेंड का डिस्टेंस है। सपोज ये एक पोजीशन है ए, उसको हम बोल सकते हैं, और ये दूसरा पोजीशन है सपोज बी, उसको हम बोल सकते हैं। इनके बीच में जो है 10 सेकेंड का डिस्टेंस है। अभी 10 सेकेंड का डिस्टेंस, सेकेंड का भी डिस्टेंस में मेजर करते क्या, मतलब डिस्टेंस को भी सेकेंड में मेजर करते क्या, नहीं, लेकिन ये जो स्पीड है तो वो स्पीड उसका कांस्टेंट है। उसका स्पीड अगर मान लेते हैं v है सपोज, तो इस v स्पीड से 10 सेकेंड में वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस की बात चल रही है। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस a एंड b, and both of these points a and b just subtend an angle of 30 degree on the ground observation point here. Suppose this is c. C is the point of observation. So a के तरफ a पे जब वो एयरक्राफ्ट आता है, तो उस समय जब हम इस पॉइंट को देखते हैं, और जब बी पे आता है तो उस समय जब हम इस एयरक्राफ्ट को देखते हैं, तो वो दोनों पॉइंट्स जो है, ऐसा करें, ये सी पॉइंट जो है यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। तो अभी ए पे जब वो एयरक्राफ्ट आएगा, तो उस समय जब हम सी की तरफ देखेंगे, तो और बी की तरफ जब आएगा तो सी की तरफ देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है। ये देखो, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, राइट। सो ऐसे हालत में हमको निकालना क्या है, we want to find out the
स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, ओके। और ये दिया हुआ है कि 10 सेकेंड्स अपार्ट जो 2 पॉइंट्स है उनके बीच में 30 डिग्री एंगल है और वो 3400 मीटर ऊपर है। चलो ठीक है, सो ये डिस्टेंस मतलब 3400 दिया हुआ है ऑलरेडी, ओके। उसको हम h मान लेते हैं चाहिए तो, ओके। और ये जो है उसका जो स्पीड है वो हमको भी मानना है, ठीक है। और ये a और b के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस हियर? इट इज गोइंग टू बी 10v। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। बिकॉज 10 सेकेंड्स में v इतने स्पीड के साथ ये एयरक्राफ्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 10v इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बिल्कुल जरूर। चलो ठीक है, तो अभी इसमें देखो, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन? How will you relate this 30-degree angle with this height 3400 here? And also we have to relate this 10v also here. तो उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक देखो ऐसा है कि अगर सपोज यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर नीचे, तो देखो ठीक से, अभी ये डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है, राइट? इट इज गोइंग टू बी 10v, ओके। और ये जो है ये उसका एडजेसेंट साइड है, बराबर। अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, इस पॉइंट को नाम देते हैं P सपोज, और इसको नाम देंगे Q, ओके। तो देखो ठीक से, इन ट्रायंगल APC, ओके, APC ट्रायंगल के अंदर क्या पता चलता है? इफ दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा सपोज, देन वी कैन से, अभी देखो इसका, इस एंगल का एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? tan थीटा रिलेशनशिप होता है, बराबर, tan। तो यहाँ पे हम tan थीटा ही यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा? सो tan थीटा इज एक्चुअली opposite upon adjacent. So what is opposite side? See it here. It is same as this h, which is 3400 here. So it will be h upon this PC, correct है? Here it is PC, no doubt. And what about this tan? क्योंकि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना, दूसरा नहीं, छोटा वाला ट्रायंगल जो दूसरा है, in the triangle BQC, what can we say? Similarly, the tan of this whole angle, देखो ठीक से, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, ये BQC, इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है? BQ है, और एडजेसेंट साइड कौन है? QC है, राइट? तो इसलिए फिर यहाँ पे tan ऑफ द एंगल थीटा प्लस 30 कितना आएगा? Opposite side, which is BQ here, which is same as H again, and that is to be divided by this QC, correct है? So this is going to be QC here. Yes. Now just we can write this PC as H by tan theta, correct है? तो इसको हम H upon tan theta ऐसा लिख देंगे, बिल्कुल। और at the same time इस QC को क्या लिख देंगे? QC को लिख सकेंगे h upon tan of theta plus 30, correct है? Yes. And then we can just put this value of h, and also we are given that PC minus QC is actually 10v, बराबर है? तो ये बात हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिल रहा है PC minus QC is equal to 10 times v, and hence PC के बदले क्या आ रहा है? h upon tan theta minus QC, which is going to be h upon tan theta plus 30, right? And that is going to be equal to 10v. Okay, so if we take this h common, and if we express this tan theta as sin theta upon cos theta, then we can be able to express it as 1 upon tan theta minus 1 upon tan theta plus 30, बराबर, and that is going to be equal to
10v। ओके, तो h के बदले जो उसका वैल्यू है 3400 डाल दो उसके बदले, तो वो बन जाएगा 3400 इंटू ब्रैकेट में। अच्छा, tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा ना, तो अगर यहाँ पे डाल देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा और वो बनेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। यस, माइनस, again just do the same thing here, so it will be cos theta plus 30 upon sin theta plus 30. Okay, and that is going to be equal to 10v. We can cancel this 0 from both sides and we'll be left with 340 into, what is this, if we just cross multiply it here, then we can get it as sin theta plus 30 into cos theta minus cos theta plus 30 into sin theta, and this whole to be divided by sin theta into sin theta plus 30, which is actually going to be equal to v. This is going to be v actually. So in the numerator it is the formula for sin a minus b, बराबर है, तो वो हमको मिल जाएगा सीधा sin of a मतलब theta plus 30 minus theta, where theta will get cancelled and we'll be left with sin 30 only, and in the denominator we can see it will be sin theta into sin theta plus 30 as it is. But theta is required actually. Okay, actually वो ऐसा है कि यहाँ पे जब एरोप्लेन है, यहाँ पे ये सपोज पॉइंट ए है और ये सपोज पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है तो वो 30 डिग्री है. So this whole angle is going to be actually 30 degree, and then we can now easily find it out because इसका जो opposite side है वो हमको पता है already 10 times of v है, बराबर, where v is the speed of aircraft and this height is actually 3400, right? And then okay, so ये जो perpendicular अगर हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पे तो इससे इसके दो पार्ट्स बनेंगे. Each of this part will be actually 5v, right? This is 5v and this is also 5v, and this angle will also be tan
sorry, this angle will be 15 degree actually. So we can make use this fact that tan 15 degree, now tan 15 degree will be equal to opposite. देखो इस 15 डिग्री का अपोजिट साइड कौन है, 5v है, और एडजेसेंट कौन है, ये 3400 है। तो इससे हमको मिलेगा tan 15 इक्वल टू 5v अपॉन 3400, and just solve this equation and get the final answer, because tan 15 can be found out from the log table into 3400, and that is to be divided by 5, which comes out to be equal to v. Yes. So it's just a matter of calculation. You can do it yourself. Okay, बाकी सारे आए आपको? ओके ठीक है, फिर हम यहाँ पे रुकते हैं, बाकी सारे ट्राई करो। ओके, और दूसरी बात कि मैंने कल भी आपको बताया था, कल भी डिक्लेयर किया था, शायद कल कोई मे बी कोई नहीं थे या पता नहीं है, तो फिर से एक बार डिक्लेयर करता हूँ कि आज से आपके डाउट सेशंस चालू हुए हैं। ओके, तो उसमें कैसा रहेगा कि 2 से 2:45 तक, ठीक है, 2 to 2:45 तक कोई भी एक टीचर, मतलब जो रोज एक अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, तो मान लो आज जैसे केमिस्ट्री का सपोज हुआ, कल सपोज फिजिक्स का होगा, परसों मैथ्स का होगा, उसके बाद फिर बायो का होगा। तो ऐसे 2 से 2:45 तक का जो टाइमिंग है, तो उसके अंदर आपका डाउट सेशन रहेगा। तो उसके अंदर आप जो जिनको डाउट है वो बच्चे वहाँ पे उस लेक्चर को लॉग इन कर सकते हैं। दैट विल नॉट बी द रेगुलर लेक्चर एक्चुअली। 2 से 2:45 का जो लेक्चर है वो रेगुलर लेक्चर नहीं रहेगा, उसमें टीचर कुछ भी सिखाएगा नहीं, बट आपके जो डाउट्स है वही वहाँ पे वो क्लियर करेगा। ठीक है, तो और वो भी वो जो लेक्चर है तो 1-to-1 ही रहेगा। आज एक्चुअली हुआ, लेकिन ज्यादा लोगों ने डाउट उसमें लॉग इन नहीं किया, बट यू हैव टू बी केयरफुल और बी एक्टिव। तो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है उस चैप्टर के अंदर, अगर आपको डाउट है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, सो कल फिजिक्स का डाउट सेशन रहेगा, मोशन इन प्लेन चैप्टर का। So you can, if you have the doubt, then you can just attend that lecture, means log into that lecture and ask the doubt whatever it may be. Otherwise, it's not compulsory actually. Okay. So ठीक है, so that's all from my side. Thank you all of you. Bye bye.